लोकसभा चुनाव 2024 अंतर्गत सूरत के जिला चुनाव अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर सौरभ पारगी ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर प्रशासन की तैयारी की जानकारी दी। लोकसभा सामान्य चूंटणी 2024 में सूरत जिला में समाविष्ट 24 सूरत पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ए बिनहरीफ जाहिर थई छे। बट मीडिया माध्यम थी अने अमुक सोर्सेस थी एवुं जाणवा मळे छे के लोकोने एवुं लागे छे कि आखा सूरत जिल्ला में ज हवे कई चूंटणी योजावानी नथी। बट ए वात सत्यथी परे छे। आपने जणाववा मागुं छुं कि सूरत जिल्ला में 16 असेम्बली सेगमेंट्स छे जे 3 पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में वहेंचायेल छे। एमांथी 7 जे असेम्बली सेगमेंट्स छे एमां 155 ओलपाड, सूरत ईस्ट, सूरत नॉर्थ, वराछा, करंज, कतारगाम और सूरत वेस्ट आ 7 असेम्बली सेगमेंट है सूरत पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में है और अहींया चूंटणी योजावानी नथी। बट आना सिवायनी जे 9 असेम्बली सेगमेंट है जेमांथी मांगरोल, मांडवी, कामरेज, बारडोली और महुआ आ जे असेम्बली सेगमेंट है ए बारडोली लोकसभा में जाए छे एटले आमां इलेक्शन योजावाना छे। साथे साथे जे 25 नवसारी पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी है एना अंतर्गत लिंबायत, उधना, मजूरा, 84 एटले मोटाभागनो जो सिटीनो विस्तार है एमां समावेश है। एटले सूरत शहर में आ जग्याओ पर चूंटणी योजावानी छे। आपणे आनी वात करीए तो बारडोली पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में 1585 मतदान मथको जे छे ए सूरत जिल्ला में समावेश थाय छे। साथे साथे जे 1297 जेटला मतदान मथको छे ए 25 नवसारी पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में समावेश छे जेनुं इन्क्लूजन छे ए सूरत जिल्ला में थाय छे एटले अहींया चूंटणी योजावानी छे। बीजी बात करिए तो मतदारों की विगत में पण बारडोली पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में 15,40,000 जेटला मतदारों अने नवसारी में 14,39,000 जेटला मतदारों छे पोताना मताधिकारों प्रयोग करी शकशे। આવી રીતે જે 23 બારડોલી में 3,18,000 જેટલા PWD 85+ વાળા મતદારો છે એ યંગ ઇલેક્ટર્સ સાથે મળીને એટલા છે। સાથે સાથે નવસારીમાં એ આંકડો 2,66,000 જેટલું થાય છે। વાત કરીએ તો આદર્શ આચાર સંહિતાનું અમલ જે છે એ આખા સુરત જિલ્લામાં અત્યારે પણ લાગુ છે એટલે એમાં કોઈ પણ છૂટછાટ નથી। બધી જ ટીમો જે છે એ કાર્યરત છે અને एमसीसी, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी એટલે બધી જ એક્સપેન્ડિચર અને મોડલ કોડને લગતી જેટલી ટીમો છે એ બધી જ ટીમો કાર્યરત છે। આપણે કુલ સુરત જિલ્લામાં હવે 2882 જેટલા મતદાન મથકો ઉપર ચૂંટણી યોજાવાની છે। આના બાબતમાં જે ઈવીએમ, વીવીપેટ્સ અને એ બધું જે તે એસેમ્બલી સેગમેન્ટને અપાઈ ગયા છે અને કમિશનિંગની કામગીરી પણ પૂરી કરવામાં આવેલ છે। સાથે સાથે જે મતદાનનું જે સ્ટાફ છે 110% લેખે પણ આપણે જે રિક્વાયર્ડ સ્ટાફ છે એ સંબંધિત જે અસેમ્બલી સેગમેન્ટ છે એમને આપી દેવામાં આવેલ છે। આપણે ગઈ વખતની જેમ આ વખતે પણ જે ઓલમોસ્ટ 1450 જેટલા પોલિંગ સ્ટેશન્સ ઉપર વેબકાસ્ટિંગ લાઈવ વેબકાસ્ટિંગ કરવાના છે અને અહીંયા કંટ્રોલ રૂમ બનાવીને આ મતદાન મથકો ઉપર ધ્યાન રાખવામાં આવશે।